As its name implies, transportation. There is some kind of transportation involved in this kind of problem. Okay, what kind of transportation? Suppose we are considering an industry. The industry is generating some of the product. Okay, the industry is generating some of the product, but that product doesn't need at this location. These items that the industry is producing is needed at some other places. Okay, at some other places. So the item produced by the industry will be transported by some mean to these locations where these items are needed. So this is actually the transportation problem. So the amount created by the industry, the amount created, the amount of item created by industry should be equal to the amount of item consumed at the other location. Okay, otherwise there will be some accumulation at this point, or at this place there is starvation of the item at this point. Okay, there is a waiting condition for the item at this point. So this is the fixed condition that amount of item created by industry should be equal to amount of item needed at destination point. Let us say it destination points. Okay, so this is the first condition. Okay, when that item is transported from this location to this location, this incur a kind of cost. If the amount is transported at one location, then you will need a truck, you will need train, and the cost of transportation will also incur in this transportation problem when the item is shifted from one place to another. This is actually the transportation problem. So it was the earliest and most important application in linear programming. Okay, in 1939 this problem was firstly recognized in 1939, and the name of the mathematician was Kantorovich. Okay, the name of the mathematician which started this kind of problem was Kantorovich. Okay, he has showed that a class of transportation type problem arise very frequently in practical situation, but the method of solution given was not complete. Okay, that we can see in every of the situation these kind of problem occur. We need to go market and take some of the items, some of the vegetable. Okay, when we do some of the party, we need the cake, these item, that item, so we have to transport the thing. So this is a very practical problem, but the solution is not complete every time. The standard form of the problem was formulated along with the constructive method given by this scientist Kantorovich. Now there were so many scientists which contributed in this field, but the most famous method which was adopted by mathematician Danjik. Okay, Danjik method
was the most famous method for these kind of transportation problem. So what was the method of Danzig? Let us discuss this thing. Suppose there are M origin, okay, that means industry or warehouses. Suppose there are M warehouses which contain various amount of commodity or item which has to be shipped to destination. Okay, destination means retail outlet, destinations. Okay, that means this is a retail outlet. So there are M warehouses and there are suppose N retail houses. Let AI be the quantity of commodity available at the origin I. So AI is the amount of commodity available at the origin. This is the origin and this is destination. I already said that this is origin and this is destination, and we have to transport this amount to all these destinations. Suppose AI is the amount of item generated at this location, and suppose Bj is the quantity required at destination Bj. Okay, suppose J is the number of retail outlet, so Bj is the amount needed at that particular outlet. Okay. And suppose if I want to transport the item from this location to this location, then Cij is the shipping charges. Cij is the shipping charges for unit quantity. For the unit quantity, if I transport item Ai to destination Bj, then Cij is the cost. Okay. Now we have to assume at this place I have given a formula that amount of item created by industry equal to amount of item needed at the destination point. Now I am going to use this thing. So the amount which has been created at the warehouse is AI. Okay. So at one instant the amount is A1, after that A2, after that A3, after that A3. So the total amount will be represented by sum of all these amounts. Okay. So I is varying from suppose it is from 1 to M, and this amount should be equal to the amount needed. Suppose at one instant of time amount B1 is needed, after B2 is needed, after B3. So the total amount will again be equal to sum of Bj, and suppose J is varying from 1 to N. So the amount produced should be equal to amount consumed. So this is an equation. It is very important equation, and I will use this equation at the later stage. So this equation implies that the system is balanced, and the problem is called as balanced transportation problem. So if the system is balanced, we call this is a balanced transportation problem. Clear? I think this is clear till now. Now the problem is to determine the number of units to be shipped from the origin I to destination J. From the origin I to destination J, we want to determine the number of units to be shipped from the origin I to destination J, so that the total demand of destination is completely satisfied and the cost of transportation is minimum. Okay. What is our aim? Our aim
Okay, in the case of balanced transportation problem, one thing we know that the items should be transported, but we need to invent a method so that this transportation cost is minimum. In the case of Flipkart and Amazon also, okay. So many individuals are buying those items. I was saying that in case of Amazon and Flipkart also, so many customers are buying different kind of item, and there are some warehouses of Amazon at different places of the country. So Amazon has to find a method so that the total cost of transportation from the warehouse to the actual customer should be minimum. Okay, otherwise if he transported the item of each of the customer one by one, then it will be very costly. So they devise a method so that so many item, the destination is same, the source is same, okay, the city is same. So on that basis they have devised a method so that the total cost of transportation get minimum. So in this case also our aim is the same. Our aim is the same, that the total transportation cost should be minimum. So I am going to write the transportation problem in the form of the objective function and the condition which we have learned in the previous topics. So let xij, which value is positive number, it is a quantity. It is a quantity to be shipped from origin I to destination J. ठीक है, ध्यान रहे, अभी मैंने एक टर्म का नाम और लिया था, and that term was Cij. Don't so these two terms are different. This is the quantity of item and this is cost of the item if you traverse the item from I to J. Okay, this is the quantity and this is the cost. So don't mix these two things to one another. These are different things. So what is xi? The quantity to be shipped from origin I to destination J. Okay. So the mathematical equation that can be written is minimize. क्या minimize? Cost of the item. वो कॉस्ट ऑफ द आइटम क्या होगा? एक क्वांटिटी, और उस क्वांटिटी को शिप करने में कितना एक्चुअल कास्ट लग रहा है. तो वो एक्चुअल कास्ट कैसे आएगा? इस क्वांटिटी में उस कास्ट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए. ओके, और जितने भी आइटम हैं इस कास्ट को सम कर दिया जाए. तो इन दिस वे we will get the total cost, and this cost should be minimized. So our aim is to minimize this function. Okay, so this will be our objective function. The problem has been converted into the previous form which we have learned in the case of linear equation in the previous chapters. Okay, so there should be some of the condition also. So subject to these condition, that the first is all the items AI. Okay, all the item AI, that means the item which has been produced at the destination Xij. The item which has been produced at the destination, and such that AI
is a positive number, that means some of the item has been produced. Okay, there is no case that the industry is closed or the industry is not producing any of the item. Okay, if the industry will not produce any of the item, in that case the value of AI would be 0. But this is not the case. We are considering that industry is producing at least one of the item, it is not blank. And the second condition for the destination is that at the destination point also the consumption of the product is also not 0. So if the consumption of the product is Bj, so Bj will be used at the destination point, so it will be represented like this. Okay, the item which has been shipped will be consumed. Okay, the item which has been produced will be shipped, this will be represented by this formula, and the item which has been shipped will be consumed. Bj is the amount of item which has been consumed, Xij is the item which has been shipped from position I to j. So this equation is saying that the item which has been shipped will be consumed, and here the equation is saying that the item which has been produced will be shipped. Okay, so in this way these two equations can be understood. Okay, Bj is also not equal to 0, that means the item should be consumed. So I think you have better understand of all these equations. This is the actual transportation problem where I equal to 1 up to m. Here also the j equal to 1 to n. Okay, and also the transportation should be there. Okay, it is not the case that there is no transportation, भाई हमको ट्रक नहीं मिल रहा है तो आइटम ही नहीं जा पाएगा. Okay, this should not be the case. The item should be transported. That means there is one another condition, this should not be equal to 0 for I from 1 to m, just like here, and j should be equal to 1 to n. So this is the actual transportation problem. Okay, असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है भाई? असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है? अगेन द नेम इम्प्लाइज दैट देयर इज सम काइंड ऑफ असाइनमेंट, जॉब असाइनमेंट. जैसे मैं यहाँ इंटीग्रल में टीचर हूँ, मुझे जो है कुछ सब्जेक्ट असाइन किए गए हैं. दैट मिस्टर मनीष माधव त्रिपाठी विल बी टीचिंग द मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, द DAS subject in this semester. Okay, and in the next semester Mr. Manish Madhav Tripathi will be teaching machine learning to you. This way all the teachers have been assigned some of the subject. Okay, this is one kind of assignment. In the same manner, at every place, at every office, there is some task, and that task should is to be assigned to some of the employees. Okay, there are some set of tasks, and that task is to be assigned to some of the person. So this is the assignment problem, that in what way the job should be assigned to person that the output is optimum. Okay, the output is optimum. We have to devise a method, we have to find out a method so that the output is maximized. So this is the assignment problem. अगर एक लाइन में समझाना हो तो इस तरीके से आप इसको समझा सकते हैं. Okay, so suppose we have n jobs. Suppose we have n jobs and n persons are there, n jobs and n persons, each of whom can perform each of the job but with varying degree of efficiency. हर आदमी n आदमी है, n जॉब हैं, हर आदमी हर जॉब को कर सकता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि
एक टीचर बोले कि नहीं यार ये सब्जेक्ट जो है मेरे बस का नहीं है, मैं, है ना, तो ये चीज़ इस केस में माना जा रहा है कि हर आदमी हर जॉब को इसमें जो है कर सकता है, बट देयर एफिशिएंसी मे बी वेरिंग, है ना। हो सकता है कोई एक्सपीरियंस टीचर एक सब्जेक्ट को ज़्यादा बढ़िया पढ़ा ले, जो कम एक्सपीरियंस है वो मतलब जो है उसको उतना बढ़िया ना पढ़ावे, लेकिन हर आदमी हर सब्जेक्ट को डील कर सकता है, ये चीज़ माना जा रहा है। इट इज़ ऑल्सो एज्यूम दैट द परफॉर्मेंस टेस्ट नंबर ऑफ आवर ऑफ ith person is the estimation of the performance. Okay, number of hours ith person take to perform the jth job, it is the measure of the performance of a particular job. यानी कि अगर किसी आदमी के ये जो जॉब असाइन कर रहे हैं, अगर जो है परफॉर्मेंस का मेजर आपको करना है, तो उस केस में क्या है कि एक जॉब को करने में वो आदमी कितना समय लगा रहा है, दैट इज़ द मेजर ऑफ हिज परफॉर्मेंस. In this way we can estimate his efficiency. Let us denote this efficiency as Cij. So Cij is the measure of the efficiency or the effectiveness, is the measure of efficiency or effectiveness of the ith person to the jth job, of ith person to jth job. In this way Cij is the measure of efficiency that a person is doing a particular job. Now we wish to assign only one job to each person. Okay, this is the another condition, that we wish to assign one job to each person, so that total cost of performance is minimum. Okay, suppose that ith person is to assign job P. Ith person is assigned to job Pi. So now the problem is to find a permutation. What is the permutation? P1, P2, because there are n persons, therefore this person would be arranged like this. ये जो इसमें आपको बता रहे हैं, इसको एक लाइन में समझा दें. ये जॉब है, ये n है, ये पर्सन है, ये भी n है. ठीक है, n पर्सन को n जॉब असाइन करना है. ठीक है, अब पर्सन 1 2 3 4 5 है. अब किस तरीके से ये पर्सन जो है लिए जाएं जॉब के लिए, देयर वुड बी n परमुटेशन. तो अगर ये n आपके मेथड हैं, तो इसका मतलब ये जो आपका मेथड है इसको दिखाया जाएगा फैक्टोरियल n मेथड से ये जॉब को असाइन किए जा सकते हैं. ठीक है, फैक्टोरियल n मेथड इनके होंगे, सो दैट द पर्सन कैन बी असाइन दिस जॉब. तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. सो द टोटल असाइनमेंट कास्ट वुड बी, अभी मैंने बताया कि जो एफिशिएंसी है वो क्या है, Cij, वेयर आई जॉब वुड बी असाइन टू jth पर्सन. तो उसको कितना टाइम लग रहा है उस जॉब को परफॉर्म करने में, इट इज़ द एफिशिएंसी, इट इज़ द कास्ट इनकर्ड टू परफॉर्म द जॉब. ठीक है,
तो व्हाट वुड बी द टोटल वैल्यू ऑफ दिस वन? अच्छा, ये जो जे है इसको चूज करने के लिए कितने मेथड आपके पास हैं? फैक्टोरियल पी मेथड है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इतने जॉब आपके पास है ना, तो फैक्टोरियल पी मेथड आपके पास हैं। तो जे के प्लेस पर आप लिखिए फैक्टोरियल पी। सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस सी आई आई तो जॉब है, लेकिन जे को चूज करने के फैक्टोरियल पी तरीके हैं। सो इट शुड बी रिटन लाइक फैक्टोरियल पी एंड दिस इज इक्वल टू द टोटल कास्ट। ओके, अगर सारे मेथड को सम कर दें सो इट विल बी द टोटल कास्ट। ये बस आपके समझ में आ रही कि नहीं? भाई देखो, ये सर आ रही है ना भाई, ये जॉब है, ये आपके आदमी हैं, लेकिन आदमी को जॉब जो है कितने तरीके से आप अलॉट कर सकते हैं, वो मेथड कितने हैं? वो तो फैक्टोरियल एन मेथड है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है पी लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर पी आपने लिया है, इसलिए पी यहाँ पर एन के प्लेस पर पी आपने लिखा है। जैसे फैक्टोरियल एन है तो ये आपका फैक्टोरियल पी हो गया। द वैल्यू ऑफ पी इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो इस तरीके से दिस विल बी द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन द सिस्टम। बट द प्रॉब्लम इज दैट बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ फैक्टोरियल टर्म द कम्प्लेक्सिटी गेट्स वेरी हाई। ये तो बड़ा स्लो हो गया, ये तो बिल्कुल जो है आपके सिस्टम को बैठा देगा। ये अगर इस जो है मेथड से हम अपनी एल्गो बनाने जाएंगे तो ये तो ऐसा प्रोग्राम बनाएगा कि सिस्टम बैठ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है, ये आपको पता ही है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट ए ग्रेट मेथड। ओके, यही मेथड था जिसको कि सबसे पहले जो है बनाया गया। फिर इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि दिस मेथड शुड बी रेक्टिफाइड, should be rectified to some extent so that it can be used in the practical situation also. Okay, now so एक आए कोनिक और दूसरे साइंटिस्ट थे इगेवरी। दोनों साइंटिस्ट आपके थे हंगरी के, ठीक है। इसीलिए इस मेथड को बोला गया हंगेरियन मेथड, हंगेरियन मेथड, ठीक है। तो ये जो हंगेरियन मेथड था, इनके अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम को आप थोड़ा सा आसान कर दीजिए कि इफ़ द ith पर्सन इज असाइंड ए jth जॉब देन द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट इज i, अदरवाइज द कॉस्ट इज 0, ठीक है। लेट x ij, ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर it will be equal to 1. That means the job will be done if the if the ith person is assigned jth job, ठीक है। यहाँ i जो है आपका पर्सन है, j आपका जॉब है, and it will be equal to 0 अदरवाइज, है ना। यानी अगर ये जॉब उस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं मिला है तो इसकी कास्ट आपकी 0 मानी जाएगी। इन्होंने प्रॉब्लम को थोड़ा सा रिलैक्स किया। इस प्रॉब्लम में एक तो ये फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर और भी आ गया। जैसे मान लो डिपार्टमेंट में शीश सर हैं, मनीष सर हैं, आपके हारून सर हैं, ठीक है। शीश सर जो है क्रिप्टोग्राफी के एक्सपर्ट हैं, मनीष सर जो है DIP के एक्सपर्ट हैं, आपके हारून सर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। मान लो डिपार्टमेंट में 3 टीचर हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, है ना। एक DIP है, आर्किटेक्चर है और आपका क्रिप्टोग्राफी है। तो पहले वाली प्रॉब्लम में ये कहा जा रहा था कि कोई भी एक सब्जेक्ट जो है किसी भी 3 टीचरों में से एक को अलॉट कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से फैक्टोरियल 3 मेथड जो है अलॉट करने के होंगे। अब इन्होंने इस प्रॉब्लम को इस तरीके से किया कि भाई चूँकि शीश सर जो है क्रिप्टोग्राफी के एक्सपर्ट हैं, तो शीश सर को क्रिप्टोग्राफी अगर मिलेगा तब तो एफिशिएंसी मानी जाएगी, नहीं तो एफिशिएंसी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ तो काम ऑप्टिमाइजेशन का हो रहा है। अगर
क्रिप्टोग्राफी जो है हारून सर पढ़ाएंगे या फिर मनीष सर पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उतना एफिशिएंटली नहीं पढ़ाएंगे जितना शीश सर पढ़ाएंगे। इसी तरीके से डीआईपी अगर जो है मनीष पढ़ाएंगे तो वो जो है ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा, बशर्ते कि डीआईपी शीश सर या फिर हारून सर पढ़ाएं। इसी तरीके से आर्किटेक्चर की बात आती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया कि इफ़ द पर्टिकुलर जॉब हैज़ बीन असाइन टू ए पर्टिकुलर पर्सन, इन दैट केस द कॉस्ट इज़ 1, अदरवाइज द कॉस्ट इज़ 0, ठीक है। नहीं तो हम ये मानेंगे कि वो कास्ट किया ही नहीं गया। तो दिस इज़ द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड लाइक दिस। अब इस प्रॉब्लम को हम जो है मैथमेटिकली लिखने जा रहे हैं, बिकॉज द प्रॉब्लम हैज़ बीन सिंप्लीफाइड, इट कैन बी सॉल्वेबल। नाउ वी कैन राइट द प्रॉब्लम एज this problem can be stated as minimize z। z क्या है? वही जो ऊपर लिखे थे, कास्ट, टोटल कास्ट CIJ multiplied by XIJ and sigma j is varying from 1 to n and sigma I varying from 1 to n. Okay, this problem now can be written in this form and subject to if the job I is assigned to jth person, then its value will be 1 for all j equal to 1 to n, ठीक है। अब आपके समझ में आ रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूँ। एंड सिमिलरली if the jth person is assigned job I, है ना। अब इसी चीज़ को जरा सा उल्टे तरीके समझो। if jth person has been assigned job I for all j equal to 1 to n, then it will be equal to 1 because the right person has been assigned a right job for all I equal to 1 to n. अगर आप ध्यान से देखें तो the problem is same as the transportation problem, है ना। देखो जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी वहाँ भी तो इसी तरीके की आपकी कंडीशन थी, बस यहाँ 1 के प्लेस पर वहाँ AI था और इस 1 के प्लेस पर वहाँ BI था, ठीक है। बाकी ये इक्वेशन सेम था, है ना। वहाँ भी तो यही था कि ये कास्ट, ये क्या था, नंबर ऑफ आइटम था जिसको कि I प्लेस से J प्लेस पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और ये हर आइटम का कास्ट था, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके टोटल कास्ट वहाँ पर आई थी, सच दैट दिस इज इक्वल टू दैट, दिस इज इक्वल टू दैट। तो द प्रॉब्लम ऑफ असाइनमेंट इज बीन converted into the problem of transportation. So all the rule of the transportation problem now can be applied to this problem also. Okay, so this is the basic finding which we have got here. Okay, this is a linear problem which has been converted into transportation problem. So we can say that the assignment problem is the special case of the transportation problem. We can say that the assignment problem is therefore a special case of the transport problem. The structure of the problem is such that every basic feasible solution is degenerate, since exactly and basic variable must have the value 0 from n minus 1 basic variable. Okay, and all the variable are equal to 0. So this is about the assignment problem. I have shared the video and you can go there and practice